Okay, good evening everyone, good evening, and this is your biology master teacher Akshansh this side, and guys, I'm back with the another session on the structure of nucleic acids. So I hope you all are doing very good. So this is the very ongoing series for NSEJS biology, in which we are actually preparing for the most advanced topics that are very important for your exam, as well as like these are those topics from where you can expect some very tricky questions, like some make or breakthrough क्वेश्चंस जो बेटा आपकी रैंक को आपके लेवल को बहुत ज़्यादा एलिवेट कर सकते हैं. So I hope you all are very much excited to learn new things today, and let me know if I'm clearly audible and visible to all of you. Hi sir. Okay. Sir आपकी आवाज़ गूंज रही है. Is it so? Just a minute guys. Let me check it. Just a minute. Okay. Is still so is it still doing like is it still echoing? अभी भी हो रहा है? अभी भी echo हो रहा है क्या? हाँ. अभी भी echo हो रहा है क्या? नहीं. I believe it's fine now. Yeah. Is it fine? Yes, sir. Okay, very good. Okay, I'm really sorry for the disturbance. Okay, so let's continue with the to the topic without any further delay. And yeah, so last class में बेटा हमने क्या क्या पढ़ा था? So who is going to tell me the name of the various nitrogen bases that we have in our nucleic acids? What are the name of those nitrogen bases? Anyone? What is the name of those nitrogen bases? So हमने क्या क्या पढ़ा था बेटा? Last class में, if I ask you what things DNA is made up of, so what will you answer me? Now that voice will not come. Okay, actually I'm at my home, so that's why. Yeah. So जल्दी से बताओ बेटा. What are those things that will make your DNA? So बेटा last class में हमने क्या discuss किया था? In the last class I had talked about so many things in very much of depth. तो सबसे पहले बेटा whatever nucleic acids we have, it is made up of some things. Okay, वो क्या क्या होते हैं? तो first सबसे पहले we have the nitrogen bases. Our DNA will be made up of A. adenine, guanine, cytosine, and thymine. These four nitrogen bases. Then we have a deoxyribose sugar. बेटा deoxyribose sugar होती है, which is what? Which is a monosaccharide. And the third thing is a phosphate group, right? यही पढ़ा था बेटा. और हमने क्या क्या पढ़ा था कि nitrogen base plus sugar is equal to nucleoside. Whereas nucleoside plus phosphate group is equal to nucleotide, right? याद है? So what we can call DNA को हम क्या कह सकते हैं? तो DNA is nothing बेटा. DNA is a polydeoxyribonucleotide. Correct है? What we can call DNA? तो DNA can called as polydeoxyribonucleotide. DNA क्या होता है बेटा? तो it is a polymer of what? So deoxyribo वाले nucleotides का polymer है. So this name simply justifies what is DNA. DNA is polydeoxyribonucleotide, whereas RNA क्या होता है? तो RNA is polyribonucleotide. Clear है सबको about the chemical nature of DNA? इतना सबको clear है? Yeah, very good. Okay, so this much is clear to all of you. Yes. So DNA क्या है guys? So DNA is the genetic material for most of the living organisms. I should say that all the cellular entities, आपकी जितनी भी cellular entities हैं, most of them have DNA as the genetic material. कुछ viruses हैं जिनमें बेटा आपका जो genetic material है वो RNA होता है, but for most of us genetic material is our DNA. It carries all the hereditary information. It has all the information, right? So आपकी डीएनए में ही बेटा आपका सेल कैसे देखोगा, आप कैसे देखोगे, आपका इंटेलिजेंस कितना होगा, आपका बॉडी वर्क कैसे करेगा, जो सारा डेटा इट इज स्टोर्ड इन आवर DNA only. And what is DNA? So DNA is nothing. It is just the arrangement of nitrogen bases. DNA क्या? It is just a very long sequence of the nucleotides that we have. ओके अब डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल क्यों है? बिकॉज बेटा इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन. आपका डीएनए रेप्लिकेट कर सकता है. आपका डीएनए बेटा एक स्ट्रैंड से
बेटा आपके पास दो डीएनए के स्ट्रैंड्स आ सकते हैं, राइट? मतलब कि आपके पास एक डुप्लेक्स से डुप्लेक्स कैन गिव राइज टू टू डिप्लेक्सेस ऑफ डीएनए, जिसी को बेटा हम कहते हैं कि डीएनए क्या है, डीएनए इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये रेप्लिकेट कर सकता है, ओके, एंड द रेप्लिकेशन इज ऑलवेज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, it is always semi-conservative in nature. Now, this process known as DNA replication. तो DNA replication को बेटा हम आने वाली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की क्लासेस में बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, बट फिलहाल हम इतना पता चाहिए कि जो डीएनए है यही हमारा जेनेटिक मटेरियल है और बेटा ये रेप्लिकेट कर सकता है, और जो रेप्लिकेशन इट इज ऑलवेज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म सेमी कंजर्वेटिव? विल टेल यू अहेड. Okay, so now which is essential for passing genetic information from one cell to its daughter or from one generation to the next one. So it is the carrier of the heredity. The offspring cells, the daughter cells, they get their DNA, they inherit their DNA from the parent cells. Okay, हमने पढ़ा है बेटा सेल साइकिल में क्या होता है. So first we have the karyokinesis, that is the division. सबसे पहले बेटा जैसे सेल साइकिल में क्या पढ़ते हैं, एस फेज में हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है. नाउ डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद क्या होता है बेटा कि जो हमारा karyokinesis होता है and followed by cytokinesis. So first we have the division of the nucleus. Okay, so the two cells, the two daughter cells are going to have their own nuclei, and then it is followed by the cytokinesis. Very good. So आगे चलते हैं. DNA. Nucleic acids exhibit a wide variety of secondary structures. One of the secondary structures exhibited by DNA is the Watson-Crick model. This model says that DNA exists as a double helix. Very important. So बेटा अभी हम डीएनए का स्ट्रक्चर जानने वाले. तो डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या बेटा कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं इनिशियली हिस्ट्री में प्रपोज किए गए थे, बट द मोस्ट एक्यूरेट वन जो डीएनए की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करवाया, दैट वाज वाटसन एंड क्रिक मॉडल. That was Watson and Crick model. Now, and for this discovery as well, they were awarded with the Nobel Prize. अब कोई बच्चा बताएगा बेटा कि Watson and Crick को कौन से ईयर में Nobel Prize मिला था? Anyone who would like to tell me? किसी को याद है? सर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन में आते हैं बेटा, आरएनए बहुत जगह पे आता है. ओके, यू हैव आरएनए, यू हैव एमआरएनए, आपके पास एमआरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए बेटा ट्रांसक्रिप्शन में आता है. यू हैव टीआरएनए, जो टीआरएनए होता है बेटा दैट इज ट्रांसफर आरएनए, वो आपका ट्रांसलेशन में आता है. आपके पास बेटा आरएनए एग्जिस्ट करता है एज जेनेटिक मटेरियल ऑल्सो. आपको पता हो, आपने पढ़ा होगा कि जो आरएनए वो हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, बट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सॉरी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी एग्जिस्ट करता है इन केस ऑफ सर्टेन वायरसेस. ओके, और क्या होता है बेटा, यू हैव एसएनआरएनए, आपके पास एसएनआरएनए होता है, स्नप्स जिसे कहते हैं, जो आपके स्प्लाइसियोसोम्स में काम करते हैं. और तुम्हें जानने आरएनए की टाइप्स, यू हैव एमआईआरएनए, माइक्रो आरएनए, यू हैव एसआईआरएनए, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए. तो आरएनए बहुत टाइप का होता है. जब हम आरएनए कहते हैं तो हमारे दिमाग में एमआरएनए की पिक्चर बन के आती है, दैट इज अ मैसेंजर आरएनए. ओके, सो चलो इतनी डेप्थ में हमें नहीं जाने की जरूरत है. ओके गाइस, टेल मी वॉटसन एंड क्रिक को बेटा कब उनको अपना नोबेल प्राइज मिला था? एनीवन? वॉटसन एंड क्रिक को कब मिला था? किसी को नहीं पता? एनीवन? किसी को नहीं पता? चलो, ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क टू सर्च टू रीड अबाउट वॉटसन एंड क्रिक. ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड. आई वांट टू टेल यू, बट तुम लोग बेटा थोड़ा सा खुद भी रिसर्च करना सीखो, राइट? ओके, सो अभी हम जानेंगे क्या, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. तो डीएनए बेटा एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है. डीएनए क्या है? डबल स्ट्रैंडेड. पता है, इट हैज टू स्ट्रैंड्स. इट हैज टू स्ट्रैंड्स. आई जस्ट गो टू अनदर स्लाइड. या सो हम यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं. जस्ट ओके, या सो बेटा हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा डीएनए होता है इट इज ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड. हमारा डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होता है. आई जस्ट ट्राई टू ड्रॉ अ डीएनए. ठीक है, पहले मैंने तुम्हें कुछ पॉइंट्स बताए थे कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल, चाहे वो आरएनए हो चाहे वो बेटा डीएनए हो, हमेशा इसकी एक पोलैरिटी होती है, राइट? सो बेटा क्या होती है पोलैरिटी? तो पोलैरिटी में यू हैव 5 डैश, व्हाट हैपेंड, या सो यू हैव 5 डैश टू 3 डैश and 5 dash to 3 dash, then opposite to it you have 3 dash to 5 dash. This is the polarity of the DNA. मैंने बताया था पोलैरिटी का. 3 dash का मतलब क्या है बेटा? फ्री OH ग्रुप. क्या है 3 dash का मतलब? फ्री OH ग्रुप. और 5 dash का मतलब क्या होता है? फ्री फॉस्फेट ग्रुप. फ्री फॉस्फेट ग्रुप. ओके, सो दिस इज द पोलैरिटी ऑफ द डीएनए. कि डीएनए हो चाहे वो आरएनए बेटा, हमेशा 5 dash to 3 dash
या फिर इसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम भी आप कह सकते हो। ओके, सो यू डबल, हमने कहा कि बेटा डीएनए जो है वो दो स्ट्रैंड्स का बनता है, तो दिस इज द स्ट्रैंड नंबर 1, दिस इज द स्ट्रैंड नंबर 2, एंड बेटा दोनों स्ट्रैंड्स की पोलैरिटी होती है। अब तुम देख सकते हो कि दोनों स्ट्रैंड्स की जो पोलैरिटी दैट इज ऑपोजिट, 5 डैश के सामने 3 डैश आ रहा है एंड 3 डैश के सामने 5 डैश आ रहा है। सो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम एंटी पैरेलल कहते हैं। क्या कहेंगे कि जो हमारी दो स्ट्रैंड्स हैं, जो डीएनए है इट एग्जिस्ट एज अ डुप्लेक्स, एंड द डुप्लेक्स में जो द टू स्ट्रैंड्स इन द डुप्लेक्स आर एक्चुअली एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, वो क्या होते हैं, दे आर एंटी पैरेलल टू वन अनदर। नाउ बेटा एक बार ट्राई करते हैं इफ वी कैन मेक द डीएनए। ओके, सो अभी बेटा हम बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो बेटा हम अपनी डीऑक्सीराइबोज शुगर बनाते हैं। So this is the deoxyribose sugar, right? OH, H. Here it will, second carbon is going to be HH only. Here it will HOH. Here it will be H. Here you will have CH2OH. Okay, this is your deoxyribose sugar. तो बेटा हमारे पास ये कार्बन है, okay, and here you have the oxygen atom. तो 1, 2, 3, 4, 5. This is the numbering. Okay, so हमने कहा था कि जो हमारे पास फर्स्ट कार्बन एटम होगा, तो फर्स्ट कार्बन एटम से यू विल हैव द नाइट्रोजन बेस अटैच, यहां से आपका नाइट्रोजन बेस अटैच होगा। ओके, सो आई जस्ट इरेज दिस थिंग एंड हियर आई विल राइट कि मेरा यहाँ पे बेटा नाइट्रोजन बेस अटैच है। ठीक है, यहाँ पे मेरा नाइट्रोजन बेस अटैच है। तो बेटा हमें यहाँ पे नाइट्रोजन बेस हमारे पास हो गया। अब इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, जो भी है हमें नहीं पता, हमने जस्ट कहा कि हमारे पास ये है। और यहाँ पे बेटा हमारे पास 5 डैश है। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, 5 डैश पे हमेशा एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम वी विल अटैच अ फॉस्फेट ग्रुप। ओके, सो हाउ द फॉस्फेट ग्रुप विल लुक लाइक, सो आई बिलीव एक फॉस्फेट ग्रुप बेटा कुछ इस तरीके से दिखता है, राइट? ओके, आई एम जस्ट मेकिंग द फॉस्फोरिक एसिड फॉर नाउ। दिस इज द फॉस्फोरिक H3PO4, so this is the phosphoric acid. Now this phosphoric acid will react, so how will it look like? ये आपका यहाँ पे बेटा ऐसे करके रिएक्शन है, तो वी आर मेकिंग द न्यूक्लियोटाइड। Okay, so the nucleotide will come like this thing. Here you have OH, double bond O. Here you have OH. Now this one is ionizable, and here it will get attached to your sugar. So here you have the oxygen. Here you have the hydrogen, and yes, here you have your nitrogen base. यहाँ पे आपका हाइड्रोजन हो गया। Here you will have the hydrogen, 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 and hydroxide, OH. Okay. So बेटा ये आपका क्या बन गया? So this is your nucleotide. This is your nucleotide. This was your nucleoside, right? And this was your phosphate group. That is a phosphoric acid for now. अभी बेटा आगे की क्या कहानी होगी? तो हम दो को लेंगे। We are just going to look at टू। ओके, सो फर्स्ट पहले ही समझ लो कि जो डीएनए में बेटा यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास स्ट्रैंड है, ये जो स्ट्रैंड है, दिस स्ट्रैंड विल बी मेड अप ऑफ शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ओके, ये जो स्ट्रैंड होगा ये बेटा एक्चुअली में कुछ नहीं, ये आपका शुगर फॉस्फेट का बैकबोन है। अभी जैसे स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा यू विल गेट टू नो। सो दिस इज द शुगर फॉस्फेट बैकबोन, और जो हमारी बेसिस होते हैं बेटा वो परपेंडिकुलर होते हैं, वो हमारे परपेंडिकुलर होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपके पास ए है तो यहाँ पे आपके पास टी आएगा, यहाँ पे अगर आपके पास डी है तो यहाँ पे आपके पास सी आएगा, अगर यहाँ टी है तो यहाँ ए आएगा, यहाँ अगर सी है तो यहाँ जी आएगा। ओके, सो लाइक द बेसिस आर परपेंडिकुलर टू द शुगर फॉस्फेट बैकबोन। सो इसी तरीके से बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं एंड विल जस्ट लुक एट दिस थिंग। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा दिस इज आवर शुगर, ये हमारी शुगर है। यहाँ से बेटा हमारा पहला हमारा नाइट्रोजन बेस है थायमिन, एंड इट इज अटैच्ड टू द एडेनिन। थायमिन हमेशा एडेनिन के संग, एक पायरिडीन हमेशा एक प्यूरिन के संग पेयर करता है। तो थायमिन बेटा एडेनिन के संग पेयर है, और बीच में आपके पास कौन से बॉन्ड्स होते हैं? तो यू हैव द हाइड्रोजन बॉन्ड। याद करेंगे बेटा ए और टी के बीच में यू विल हैव 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जी और सी के बीच में यू विल हैव 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, अभी बेटा यहाँ पे देखेंगे हमने कहा कि दो स्ट्रैंड्स दे आर एंटी पैरेलल टू वन अनदर। तो बेटा अगर एक स्ट्रैंड इस तरीके से जा रहा था तो द नेक्स्ट स्ट्रैंड इज सपोज टू बी ऑपोजिट ऑफ द फर्स्ट वन। कीप इन माइंड कि ए को टी के साथ रखना है, जी को सी के साथ रखना है। Okay, so this is how this thing will look like. So यहाँ पे आपके पास दो strands हैं. This is the first nucleotide. This is the second nucleotide. Here you have the second nucleotide. This is the first nucleotide. I'm just labeling them. So यहाँ पे हमने क्या देखना है बेटा? हमें ये देखना है कि सर हमारी sugar phosphate backbone थी. Here you have the sugar phosphate backbone. And बेटा इसकी sugar phosphate backbone में हमारा जो nitrogen base था, it was like perpendicular to the strand. ठीक है, तो ये हमारे इस तरीके से ऑल द अरेंजमेंट इज एक्सिस्टिंग। नाउ थोड़ा सा और इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। सो हियर ये बेटा मेरा पहला शुगर हो गया। ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ स्ट्रैंड फॉर डीएनए फॉर यू। ठीक है, ओके, दिस इज नॉट अ हेड, दिस इज द ऑक्सीजन।
यहाँ पे हम ऐसे करके उल्टा बनाएंगे, या सो हाउ विल दिस वन लुक लाइक, एन इन्वर्टेड पेंटागन, यस। सो यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे सपोज करो एडेनिन है, एंड हियर वी हैव द थाइमिन, हियर यू हैव द ग्वानिन, एंड सपोज करो यहाँ पे हमारे पास है साइटोसिन। ठीक है, ये बेटा एकदम साथ साथ रहेंगे, थोड़ा अप डाउन हो गया, कोई बात नहीं। ओके, यहाँ पे देखेंगे बेटा, तो यहाँ पे तो हमारे पास फ्री OH ग्रुप होगा, और यहाँ पे बेटा जो हमारे पास CH2OH था, यहाँ पे यू विल हैव अ फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड, सो O P डबल बॉन्ड O OH, here you have the OH। ठीक है, दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप, सेम थिंग विल बी हैपनिंग ओवर हियर, CH2 देन O, देन आपके पास बेटा यहाँ पे क्या होगा, आपके पास यहाँ पे मैं इसको फॉस्फेट को अगर मैं थोड़ा सा मूव कर दूं ऊपर की तरफ, आई बिलीव कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। यहाँ पे आपके पास OH आ गया, ये आपका यहाँ का OH है। ठीक है, सेम थिंग विल हैपन हियर, सो here is going to be the fifth one, CH2OH, this is the third, okay, first second third, so here you have the OH, this is the fifth one, तो यहाँ पे आपका बेटा फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होगा, I'll just erase this then, P double bond O OH, and then here OH, okay, rather I should make it like this, here you have the oxygen, then phosphate double bond O OH, and then here you have OH, यहाँ पे बेटा आपके पास ये थर्ड कार्बन है, तो यहाँ पे आपके पास एक OH हो गया, तो अगेन here you have a hydrogen, here you have CH2, and then again a phosphate group। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे आपके पास एक फ्री फॉस्फेट, ओके, दिस इज गोइंग टू बी द 5' एंड यहाँ पे देखो बेटा एक फ्री OH ग्रुप है, दिस इज गोइंग टू बी द 3' एंड सिमिलरली देखो यहाँ पे एक फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दिस इज गोइंग टू बी द 3' एंड यहाँ पे एक फ्री फॉस्फेट ग्रुप है, तो दिस इज गोइंग टू बी द 5' एंड, और यहाँ पे बेटा यहाँ पे इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, सर यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। अब बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉन्ड बन सकता है, दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे एक बॉन्ड बन सकता है, लाइक देयर कैन बी अ पॉसिबल एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हियर, सो बेटा इधर से मैं क्या करूंगा, मैं वाटर को एलिमिनेट कर दूंगा, एंड आई विल मेक इट लाइक दिस। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, मैंने वहां से वाटर को एलिमिनेट कर दिया, ओके, हाउ द एलिमिनेशन विल हैपन, जस्ट द वे हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, तो यहाँ पे आपके पास O लग गया, एंड या तो हियर यू हैव दी, ओके, दिस इज द फर्स्ट ओके, दिस इज द फर्स्ट फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, दिस इज द सेकंड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ये भी एक एस्टर बॉन्ड है, ये भी एक एस्टर बॉन्ड है बेटा। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या होगे, तो 2 एस्टर बॉन्ड है, एंड बोथ आर हैपनिंग विद द फॉस्फेट फॉस्फोरस ओनली, तो इसी को बेटा हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं, व्हाट वी कॉल इट एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे भी आपके पास बेटा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन और यहाँ पे आपका OH, ये दोनों कंबाइन करके यहाँ पे वाटर एलिमिनेट होगा, water will get eliminated, and here you will get again a ester bond, so one ester bond was here, second ester bond is getting formed here, so दो हैं, so that is diester bond, so this is the phosphodiester bond। I hope it is clear to all of you, very good। चलो, so you want me to use some other color, which color, yellow, okay, no, I believe yellow will not show up, ये कलर ठीक रहेगा, right, yeah, नेक्स्ट चलता है। सो आई होप इट इज, अगर मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई करके देखें बेटा, तो कैसे दिखेगा, तो एक बार फिर से बनाते हैं, हियर यू हैव द नाइट्रोजन बेस, सपोज करो A है, यहाँ पे हमारे पास बेटा फॉस्फेट ग्रुप आ गया, ओके, अगेन हियर दिस इज द फिफ्थ वन, CH2, एंड हियर यू हैव अगेन दैट फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पे बेटा आपकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे अगर A था, तो हियर इट इज गोइंग टू बी T, फर्स्ट कार्बन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए इन बिटवीन, एंड हियर यू विल हैव अ फ्री OH ग्रुप, so यहाँ पे again आपके पास बेटा CH2 and then again a phosphate group, okay, so this one is going to be attached with the third carbon of the adjacent nucleotide, so again CH2 and then here you have a phosphate group, यहाँ से आपका बेस लटक रहा होगा बेटा, तो इधर सपोज हम यहाँ पे G ले लेते हैं, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो phosphate group again this is CH2, okay, it is again the whole phosphate group मतलब वही बेटा PO4 the whole thing, and here you have your nitrogen base just like this thing, तो this is C, and यहाँ पे आपके पास OH हो गया। ठीक है, तो ये आपका बेटा क्या है, so here you have the this is the sugar phosphate, और यहाँ पे you have the 3 hydrogen bonds, okay, so यहाँ पे 3 hydrogen bonds हो गए,
like these are the hydrogen bonds. This is the 5' end, which represents the free hydroxyl free phosphate group. This is the 3' and that denotes the free hydroxyl group. तो सिमिलरली बेटा अगर वो 5' है तो ये 3' हुआ और ये 5' हुआ. यहाँ पे बेटा आपके पास क्या है, तो यहाँ पे आप अगर मैं कहूँ कि एडेनिन और दो नाइट्रोजन बेसिस के बीच में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड था, शुगर और एडेनिन के बीच में बेटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है. क्या है? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वट एवर यू वांट टू कॉल इट एज. और ये यहाँ पे क्या है, तो बेटा यहाँ पे आपके पास एक एस्टर बॉन्ड है एंड हियर यू आल्सो हैव एन एस्टर बॉन्ड. ओके, दीस टू आर एस्टर बॉन्ड, सो दिस इज द फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर, लाइक दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए एट द मॉलिक्यूलर लेवल. बेटा यही आपका मॉलिक्यूलर लेवल पे स्ट्रक्चर है. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, तो सेम चीज आप देख सकते हो. ओके, दिस इज द फर्स्ट, आई जस्ट चेंज द कलर नाउ. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट ester bond, this is the second ester bond, and this is the phosphodiester bond. Yeah, so now looking at the structure, बेटा बहुत ध्यान से समझेंगे कि हमारा जो डीएनए होता है बेटा, उसमें you have two anti-parallel strands. You have two anti-parallel strands. Now ये जो डार्क कलर से, this is the sugar phosphate backbone, and यहाँ पे बेटा बीच में आपके नाइट्रोजन बेसिस जो है, they are perpendicular to the sugar phosphate backbone. ओके, अब बेटा जो स्ट्रैंड होता है, बहुत ध्यान से सुनना, ये स्ट्रैंड होता है बेटा, ये ना पूरा का पूरा एज अ होल इट कर्व्स. ठीक है, एज अ होल इट कर्व्स, like the two strands are not twisted over one another. Okay, what I say कि the two strands, आपका बेटा जो दो strands हैं, 5' to 3', 3' to 5', they are not twisted over one another. Instead the whole duplex is twisted. समझ रहे हो? मतलब कि ऐसे ये दो strand parallel रहेंगे. ठीक है, ये दो strands parallel रहेंगे, but the whole duplex will be twisted. अगर मुझे इसको 3D में इमेजिन करना होगा तो how will it look like? You can see आपका पूरा का पूरा डुप्लेक्स है बेटा. जैसे आपने सीढ़ियां चढ़ी होंगी, इफ यू गो टू सम वेरी फैंसी रेस्टोरेंट्स और सम होटल्स, यू विल सी कि वहां की जो चेयर्स होती हैं वो एकदम ऐसे करके ट्विस्टेड सी होती हैं. ऐसा तो नहीं होता कि जो आपकी दो चेयर्स की जो दो एंड्स है दे आर ट्विस्टेड. नो, लाइक द होल स्टेयर केस इज ट्विस्टेड द सेम वे. यही बेटा आप देखो एकदम सीढ़ी जैसा लग रहा है. द होल स्टेयर केस, आप समझो आपके पास एक लंबी सी सीढ़ी थी और उस सीढ़ी को आपने एकदम ट्विस्ट कर दिया है. द होल stair has got twisted, right? So the same thing is the structure of DNA. So अभी हम यहाँ पे बेटा dimensions देख लेंगे. पहला हमें पता होना चाहिए कि बेटा दो strands के बीच में गैप कितना है. So guys, it is 20 angstrom और 2 nanometer. Okay, अभी बेटा आपके एक टर्न में, ठीक है, आपके एक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड बेसेस आते हैं. कितने आते हैं? तो एक टर्न में बेटा 10 बेस पेयर्स आते हैं. कितने आते हैं? 10 बेस पेयर्स आते हैं. एंड ये जो बेटा आपका पिच होता है, राइट, पिच फिजिक्स में पढ़ते हो बेटा. So a complete turn is the pitch. Okay, so I'll just write it over here. आपके पास एक complete turn में, one complete turn, इसका बेटा लेंथ कितना होता है? तो it is 34 angstrom, 34 angstrom. Okay, और one complete turn में कितने बेस पेयर आते हैं? तो it will have 10 बेस पेयर्स. It will have 10 बेस पेयर. तो बेटा दो बेस पेयर के बीच में कितना गैप हुआ? ओके, मैंने कहा कि यहां से लेकर यहां तक का बेटा, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का जो था, ओके, इट वाज लाइक 10 बेस पेयर्स वर कमिंग एंड इट वाज 34 एंगस्ट्रॉम. सो दो बेस पेयर के बीच में बेटा कितना होगा? तो इट इज गोइंग टू बी 3.4 एंगस्ट्रॉम. इट इज गोइंग टू बी 3.4 एंगस्ट्रॉम. अब बेटा डीएनए में क्या होता है जब ये ऐसे ट्विस्ट करते हैं ना, सो व्हाट इज द नीड ऑफ दिस ट्विस्टिंग? हमें ट्विस्ट क्यों कराना है? सो बेटा जब ये डुप्लेक्स आपका ट्विस्ट करता है तो उसमें बेटा बनती है ग्रूव्स, minor grooves and major grooves. Okay, this one is going to be the minor groove, this one is going to be the major groove. What is the diameter of the major groove? So it is 22 angstrom. And what is the diameter for minor groove? So it is 12 angstrom. अभी बेटा ये जो ग्रूव्स बन रहे हैं इनका क्या इंपॉर्टेंस है? तो ये ग्रूव्स में एक्चुअल में यहाँ पे आपकी डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स जो होते हैं, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स, दे कम एंड दे बाइंड टू द डीएनए. क्या है डीएनए का, या जब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो कई सारे प्रोटीन्स होते हैं जो आके आपके डीएनए से बाइंड करते हैं. Now those proteins need some space जहां पे वो फिट कर सके, जहां पे वो बाइंड कर सके, and also to determine which genes should be expressed or which genes should be inhibited. कौन से जीन्स आपके एक्सप्रेस होने चाहिए, कौन से जीन्स आपको इनहिबिट होने चाहिए, तो उनका ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिट होना चाहिए. तो ये जो बेटा पूरा मैकेनिज्म है, लाइक द जीन रेगुलेशन, the regulation of the replication, the regulation of the transcription, or even the process of replication or transcription. ओके, इसमें आपके कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं जो डीएनए से आके इन्हीं मेजर ग्रुप्स या माइनर ग्रुप्स पे बाइंड करते हैं. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस, राइट. तो हमने क्या पढ़ा कि एक पेज में बेटा कितने हैं? एक कंप्लीट टर्न में यू विल हैव 10 बेस पेयर्स. नाउ
दो बेस पेयर एंड इट इज गोइंग टू हैव 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। अगर मैं एंगस्ट्रॉम में 34 एंगस्ट्रॉम, तो दो बेस पेयर में इट इज गोइंग टू बी 0.3 नैनोमीटर, 34 नैनोमीटर और 3.4 एंगस्ट्रॉम। दो स्ट्रैंड्स के बीच में कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम का गैप होता है। मेजर ग्रूव का 22 एंगस्ट्रॉम, माइनर ग्रूव का 12 एंगस्ट्रॉम, एंड दिस इज द राइट। सो यहाँ पे बेटा आप देख सकते हो हमने सारी की सारी बात, ओके। तो अगर इफ यू सी, तो हियर यू हैव द, इफ यू कैन इमेजिन, दिस इज द मेजर ग्रुप। अब आपके सामने ये वाली माइनर ग्रुप है, ओके। सिंस जीआईएफ इज मूविंग, आई कांट एक्चुअली टेल यू बेटा। जहां पे आपको बहुत ज्यादा ह्यूज गैप दिख रहा है, दैट इज द मेजर ग्रुप। जहां पे आपका कम सा गैप आ रहा है, दैट इज द माइनर ग्रुप। सो या क्लियर है, और यू वांट टू आस्क एनीथिंग? सो बेटा हमें याद करना है कि इट इज लाइक दो बेस पेयर्स के बीच में कितना डिफरेंस होता है। तो लाइक बिटवीन टू बेस पेयर्स यू हैव 3.4 एंगस्ट्रॉम, ओके। ये वाला बेटा बीडीएन होता है, ओके। इससे डीएनए के भी स्ट्रक्चर्स में टाइप्स होते हैं, तो दिस वन इज बीडीएनए, ठीक है। बीडीएनए इज द मोस्ट कॉमन डीएनए। सो बीडीएनए का ये स्ट्रक्चर है जो वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था। एंड नाउ सो वी आर डन, लेट्स टॉक अबाउट द आरएनए। सो बेटा आरएनए में सब कुछ सेम रहता है, जस्ट हमें क्या पता होना चाहिए कि इन द केस ऑफ आरएनए व्हाट वी हैव। सो आई जस्ट राइट अबाउट आरएनए ओवर हियर ओनली, ठीक है। यहीं पे आरएनए के बारे में लिख लेते हैं, ओके। दिस वन इज डीएनए, तो आई जस्ट राइट। सो दिस इज योर बीडीएनए। अब हम आरएनए के बारे में बात कर लेते हैं, बीडीएनए। नाउ टॉकिंग अबाउट द आरएनए, तो आरएनए में क्या होता है, इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। देन बेटा हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास नाइट्रोजन बेसिस कौन कौन से होते हैं। सो बेटा नाइट्रोजन बेसिस होंगे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। तो हमने पढ़ा था बेटा थायमिन क्या होता है। थायमिन में कुछ नहीं होता, इट इज लाइक ऑन द 5' पोजीशन ऑफ द 5th कार्बन यू हैव अ मिथाइल ग्रुप अटैच्ड, दैट इज, ठीक है। तो थायमिन क्या होता है, 5 मिथाइल यूरासिल होता है। सो प्लीज रिमेंबर दिस, इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड ये, और इसमें शुगर कौन सी होती है बेटा, राइबोज शुगर होती है, राइबोज शुगर होती है। तो बेटा राइबोज शुगर और डीएनए में एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट शुड नो। बेटा यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास जो सेकंड कार्बन था, ओके, जस्ट लुक एट द स्ट्रक्चर, सेकंड कार्बन पे देयर इज नो ओएच ग्रुप। बट अगर बेटा जब आरएनए का स्ट्रक्चर आएगा, सो आरएनए के स्ट्रक्चर में अगर हम राइबोज शुगर को देखें, सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे आपका OH होगा, यहाँ पे भी आपके पास OH होगा। हियर यू विल हैव द बेस, हियर यू विल हैव द CH2 एंड अटैच्ड टू इट यू विल हैव अ फॉस्फेट ग्रुप, राइट। दिस इज गोइंग टू बी द राइबोन्यूक्लियोटाइड। सो बेटा यहाँ पे जो सेकंड कार्बन पे जो OH ग्रुप है ना, दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज वेरी रिएक्टिव। तो इस रिएक्टिविटी की वजह से क्या होता है, जो आपका आरएनए होता है दैट इज लेस स्टेबल, ओके। सिंस इट इज रिएक्टिव सो इट इज लेस स्टेबल देन डीएनए। डीएनए में था ही नहीं बेटा, तो वहां पे यहाँ पे सोचो OH है, यहाँ पे बेटा कोई भी ग्रुप आके अटैच हो सकता है, मिथाइल ग्रुप आके अटैच हो सकता है, यू कैन डू अल्काइलेशन ओवर हियर। आप बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताओ, आप अल्काइलेशन कर सकते हो, आप एसिटाइलेशन कर सकते हो, etc etc, so phosphorylation so many modifications can happen. So on this second group multiple modifications are possible. तो इन modifications की वजह से बेटा क्या होता है, जो RNA होता है it is very reactive and hence it is less stable than DNA. Okay, so now we can take some quizzes. किसी को कुछ पूछना है तो you guys can ask me. Okay, change the color. बेटा तुम इसको ना you can put it on landscape actually. ठीक है, बस कोई बात नहीं, खत्म ही हो गया. So yeah, I believe I should increase the thickness. How can I increase the thickness? हाँ ठीक है, ये वाला ठीक काम कर रहा है. Okay, I'll use this color now. So tell me the answer to this question. Distance between two strands of BDNA. So you have two strands. What will be the distance between the two strands? What should be the answer to this question? What should be the answer? Is it A 3.4 angstrom? Is it B 340 angstrom? Is it C 20 angstrom? Yeah, it is D 34 angstrom. A, B, C or D? What should be the answer? Okay, what should be the answer? A, B, C or D? Yeah, be quick. Okay, it should be A. Students are saying it should be A. Are you sure? Beta C, oh, the question is about the distance between the two strands. So this is the first strand, 3' to 5', and this is the next strand,
5 डैश टू 3 डैश, तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होता है बेटा 20 एंगस्ट्रॉम का होता है या 2 नैनोमीटर होता है. नाउ एक कंप्लीट टर्न में यू हैव 34 एंगस्ट्रॉम और दो बेस पेयर्स के बीच में यू हैव तो मतलब दो एडजेसेंट बेस पेयर्स के बीच में, मतलब यहाँ और यहाँ के बीच में दिस इज गोइंग टू बी 3.4 एंगस्ट्रॉम. वन कंप्लीट टर्न इट इज 10 बेस पेयर्स होंगे, उसमें इट इज गोइंग टू बी 34 एंगस्ट्रॉम. 340 तो कुछ होता ही नहीं है. आगे चलते हैं. इन a nucleic acid a phosphate moiety acid links the very important question. Now this one is a purely NSEJS question, a question directly from the structure of the DNA. Obviously एक nucleic acid में एक phosphate moiety acid मतलब एक phosphate group will link what 3 dash carbon of sugar of one nucleotide to the 5 dash of the sugar of the succeeding nucleotide, 5 dash of the sugar of one nucleotide to the 3 dash of sugar on the succeeding nucleotide, 3 dash carbon of the sugar of one nucleotide to the 5 dash carbon of sugar of the preceding nucleotide, या sugar on one hand and nitrogen base on another. So एक phosphate moiety या एक phosphate group किन दो को लिंक करता है. Okay, what should be the answer to this one? Is it A, B, C or D? What should be the answer? Any guesses? Okay, A. What should be the answer to this one, guys? A, B, C or D? So the answer should be A. A is the correct answer. Okay, देखो बेटा बहुत easy है. यहाँ पे we'll just look at the two nuclei. Okay, I'll just go here to solve this. Okay, just need some space. I'll just go back to the diagram. ये मैंने बनाया था बेटा. देखो ये आपका 5 dash group से attached है. Right here you have the 5 dash group जिससे आपका phosphate group attached है. और बेटा इसके बाद वाला जो है लाइक द नेक्स्ट वन द सक्सीडिंग वन, प्रीसीडिंग मतलब पीछे वाला, एंड इसके बाद नेक्स्ट वाला कौन है या दिस वन. सो इसके 3 डैश एटम से अटैच कर रहा है. राइट, इट इज अटैचिंग टू द 3 डैश कार्बन. सो द आंसर शुड बी ए. द आंसर शुड बी व्हाट? इट शुड बी ए. ए ठीक है, मतलब कि आपका जो शुगर होगा उसके 5 डैश से बेटा आपका फॉस्फेट ग्रुप नेक्स्ट शुगर के 3 डैश एटम से कनेक्ट करेगा. सो ए शुड बी द राइट आंसर. नाउ दिस वन वाज वेरी इंपॉर्टेंट. You have to read all these statements and find the incorrect one. Incorrect. Okay. So A and G of one strand compulsorily base pair with C and T respectively on the other strand. Is it true? A C के संग pair करेगा, G T के संग pair करेगा. There are two hydrogen bonds between A and T, three between G and C. At each step of action, the strand turns 36 degree. The pitch of B DNA is 3.4 nanometer. What should be answer? What should be the answer to this question? You have to tell the incorrect one. Okay, so you have to do some calculations also. What should be the answer to this question? Okay, A. Students are saying that the answer should be A, I believe. Yeah, A is the correct answer. देखो बेटा, pitch like a complete turn, one complete turn में 34 angstrom cover होता है. This is correct. अब बेटा one complete turn मतलब 360 degree and one complete turn में you were having 10 base pair. 10 बेस पेयर आ रहे थे तो मतलब एक बेस पेयर में मतलब एक स्टेप पे एक बेस पेयर में जो डीएनए होगा वो आपको 36 डिग्री से घूमेगा. तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. राइट, आगे चलते हैं. तो ए एंड टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं. ट्रू. 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन जी एंड सी. ट्रू. ए बेटा टी के संग लिंक करते हैं, जी सी के संग करते हैं. दिस स्टेटमेंट इज गिवन रॉन्ग. इट इज गिवन इनवर्स. ठीक है, ए टी के संग करेगा, जी सी के संग करता है. एंड नाउ सिमिलैरिटी ऑफ आरएनए एंड डीएनए इज दैट बोथ are double stranded. Are they both double stranded? Do they have the same sugar? Are polymers of nucleotides have similar pyrimides? So you have to tell what should be answer, like what should be the right answer. Is it A, B, C or D? Similarity of RNA and DNA is both that they are double stranded, have the same sugar, are polymers of the nucleotides or have similar pyrimides. Okay, students are saying it should be C, and let's see. Yeah, C is the right answer. Double stranded है बेटा. RNA single stranded होता है जनरली. double stranded RNA exist करता है. reoviruses में double stranded होता है. But for now we'll just keep कि okay, it is single stranded generally, and DNA भी single stranded हो सकता है. Some viruses have single stranded DNA. तो बेटा उनमें
ठीक है. So it is like a DNA bacteriophage 5 cross 174. This is the name of the virus. इसमें single stranded DNA होता है. You guys can search and read about it. Okay, so इसलिए भी this is गलत. Same sugar, no. RNA will have ribose sugar, DNA is going to have deoxyribose sugar. Are polymers of nucleotide? This is true. Similar pyrimides होते हैं नहीं बेटा. RNA में you have U and C, whereas DNA में you have C and T. ठीक है, तो एक एक अलग है. RNA will have uracil, DNA will have thymine. So this is also wrong. So answer should be C. And that's it. That's it. Okay, so thank you very much. Now, if you have any doubt, you guys can ask me. Pyrimidines क्या होते हैं बेटा? Pyrimidines हमारे जस्ट गो एंड वॉच द प्रीवियस लेक्चर्स मैंने कवर किया था. प्यूरिन्स बेटा दो होते हैं. ओके, प्यूरिन्स में 1379 पोजीशन पे आपका नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है. आई आल्सो ड्रॉन द स्ट्रक्चर इन द लास्ट क्लास. प्लीज गो एंड चेक इट. तो एडेनिन एंड ग्वानिन को बेटा प्यूरिन्स कहते हैं. पायरिमिडीन्स में बेटा 1 और 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है. प्यूरिन्स में कुछ नहीं होता बेटा. पायरिमिडीन रिंग में भी ऐड एन इमिडाजोल रिंग. जस्ट गो एंड वॉच द प्रीवियस लेक्चर, यू विल गेट इट. सो पायरिमिडीन में बेटा आपके पास तीन होते हैं, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल. ठीक है. Okay, so that's it, guys. Now, if you have any doubt, you guys can ask me, or you can also put it in the comment section. Keep on revising, keep on practicing. Bye, everyone. Take care. Have a great day ahead. Good night. Okay, it's the evening only. So, good night. Take care. We'll meet next Saturday with another very interesting topic. So, keep on waiting. Subscribe to the channel. Take care. Bye bye.